present here today. This is the official unveiling of the Mumbai Fest, which is happening on the 26th, 27th and 28th of January 2018, this coming week. It gives me immense pleasure this afternoon to be introducing my fellow trustees. I'm going to start with Shri Amarnath Sharda ji, Krishna Kumar Singh ji, Captain Avinash Singh and Shri Harjeet Anand ji. These are the trustees and the people behind the Mumbai Fest. And as I said, this is the official unveiling and we expect all of you all to be there on the 26th, 27th and 28th of January 2018 at the MMRDA grounds, which is not far from here in Bandra. And there's a Mumbai in me, there's a Mumbai in all of us, and there's a Mumbai in you. So to celebrate Mumbai, which is made of 7 islands as you all know. So this concept of the Mumbai Fest was created on those 7 islands. What is happening in these 7 islands is something for you to come and see. There's fashion, there's Bollywood industry, there's food, there's culinary, there's lounges, there's EDM nights. Mika Singh is performing on the 26th evening. Drum Cafe is going to be creating Guinness Book of World Record with 2,100 drums which are going to be played at the Mumbai Fest on the 26th. Then on the last day, the 28th, we have some celebrities who are performing along. There's a band, Agni, which is one of the most famous bands, which is also going to be performing there. So there's a lot happening at the fest. There's so much for the kids. It's a fest for Mumbaikars. The families have to come and enjoy themselves and see what this fest is all about. As I said, it's a signature festival. It's a melting pot of all cultures. That's what Mumbai is all about. And the spirit of Mumbai, the Mumbai Fest. The fest, which is one of its kind, happening at the MMRDA grounds once again on 26th, 27th and 28th of January. Please be there, the Mumbai Fest. I'm going to now hand over the mic to our trustee, Shri Krishna Kumar Singh ji, who wants to give a few words. ये बहुत ही आनंद का क्षण है कि हमको ये अवसर प्रदान किया गया कि हम आपका मनोरंजन एक ही मंच पर हर तरह से कर सकें। द मुंबई फेस्ट प्रोग्राम चूँकि हम लोग पहली बार कर रहे हैं तो आपके सहयोग की भी आशा करते हैं और हर वर्ग से, चाहे वो मतलब किसी भी एज के ग्रुप हो, हर ग्रुप से हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इसका मिल रहा है और आगे भी हम आशा करते हैं कि इसको अगर आप सहयोग देंगे तो हम बहुत आगे बढ़ाएंगे अपने राज्य में, अपने देश में और विदेशों में भी जो है। और हमको अभी से वहाँ भी मांग आ रही है कि हमारे यहाँ भी ये प्रोग्राम आप करें। तो आप सबका सहयोग हम चाहते हैं कि 26, 27 और 28 जनवरी को जो है यहाँ पर आके हमारा उत्साह बढ़ाएं और अपना भी उस उत्सव का आनंद लें। ये एक अच्छा विषय है कि इसमें हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती हैं। कोई खेल का शौकीन होता है, कोई खाने का होता है, कोई म्यूज़िक का होता है, कोई गाने का होता है। तो एक ही स्टेज पर सब तरह के लोग अपना अपना प्रदर्शन करेंगे और उनका मान सम्मान अगर बढ़ाएंगे तो उनका उत्साह भी बढ़ेगा और आपका हमारा नाम भी होगा। और क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मुंबई के वासी जो हैं बहुत ही जिंदा दिल होते हैं और हर चीज़ को जो है बड़े उससे एंजॉय करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आएँ और हम लोग का उत्साह बढ़ाएँ ताकि हम जो हैं आपके सहयोग से आगे बढ़ें और देश विदेशों में भी जो है मुंबई का नाम जो है रोशन करें। धन्यवाद। साथियों, Mumbai itself was made by the 7 islands. Concept of 7 islands, Mumbai was made, and Mumbai festival has its mission for that. How the Mumbai has come. Then it is India. Mumbai is basically known as India today. India is Bombay. The way we are progressing in 2025, Mumbai will be known as the world capital. It is a world mission. So we are just presenting Mumbai in itself for entertainment, pleasure, food, everything, culture, art, you name the thing, it is in Mumbai Festival, the Mumbai Festival. We request you to join us and for not only in Mumbai today, but it will go far ahead, far ahead. Our all invitations are there internationally. We are taking this Mumbai Festival further and further. Thank you. The Mumbai Fest, as everybody knows, Mumbai was made of 7 islands. The concept was conceived by our charitable trust, and these 7 islands have been created in BKC 3 lakh square foot
This is going to take place, the history is going to take place on 26, 27 and 28. The concept has been appreciated by all the segments, corporate, entertainment segment, and we are, as all the trustees have told, we are getting invitations from abroad itself. ये आप ये इवेंट करिए और हमारी कंट्री में भी आइए, because this the main thing about this event is it is a melting pot where all the cultures and in total entertainment for kids, for youth, and as well for senior citizens, because we are involved the CSR activity as well. Brahma Kumari is supporting us, Rotary is supporting us, lot of medical camps like blood donation, diabetic, and lot of information is going to be given by this NGO to the crowd there, and we are expecting 1,000 in numbers. The crowd is going to come, so please support us, as this is going to be the first, other than entertainment, as Mika is going to perform in the evening, and then lot of Padma Shri, Padma Bhushans. Then again it is a CSR, because we are promoting them. We are giving them a platform where youth can come and watch them, and this our real culture, what was the Indian culture, is going to be promoted. Thank you. And special thanks to Dr. Vinod Hasan, whose support and whose vision has got Mumbai Fest today, and we are all standing here. Now we all trustees started somewhere as in family, where we took this vision and imagination, where we started this vision of carrying out the charitable trust of Mumbai Fest. I would like to personally thank all of you and mention few salient features which I'm sure everyone has covered, where we have something very important aspect which is called World Peace Charter, which is one of the prominent features of the Mumbai Fest, since it is a charitable trust, and all the prominent spiritual leaders are coming on that day and they are signing a World Peace Charter. The message is going to go across the world. That's how they are saying that, you know, people across the world are inviting us to carry out the Mumbai Fest in other part of the world also. As the theme is Mumbai in me, there is Mumbai in you, there is Mumbai in me. And let's take this Mumbai to a different dimension, a world famous Mumbai. That's what the target is. Thanks so much. I think so. It's a valid question. I should have actually answered it when I started it. We are starting on the 26th of January with the flag hoisting. It's happening at 8:30. I want all of you all to be present there from 8:30 a.m. in the morning, where we're going to have the flag hoisting, and then we're going to have this beautiful, beautiful celebration with drummers. We have fantastic lineup which is taking place. The cultural, the entire entertainment is going to be there in the morning also, and then the flag. We're going to flag off 50 vintage cars and 50 bikes, which somebody should not miss. Besides the flag hoisting. What about the security? When you say securities, what do you mean by securities? Concert may normally women are unsafe. So I don't think so. Mumbai, I feel, is the most tolerant city and one of the most safest cities in the world. no, actually before also study concert में एक चीज का issues हुए थे. अच्छा, मेरे ख्याल से शुभ शुभ बोलते हैं, राइट? मुंबई फेस्ट एक ऐसा फेस्टिवल होगा जहाँ पे कोई हादसे नहीं होंगे. ईश्वर की और अल्लाह की कृपा रहेगी, मुझे मालूम है इस फेस्टिवल के ऊपर. और just to make it safer, I think so, this festival is also promoting women empowerment, as our trustee very nicely said it, Harjeet Singh ji, who said it, that we are promoting women empowerment also. You know, there are many social causes that are joined with it, and women empowerment is one of them. So there's going to be special features, special securities who are going to be present there. We are looking at around what, 200, Captain Avinash? We are looking at around, we are looking at 200 in numbers in terms of also security for everybody at the fest. तो द मुंबई फेस्ट के लिए आपने जो ग्राउंड चुना है, बैंड्रा ग्राउंड, तो आपने बैंड्रा को ही क्यों चुना, उस प्लेस को दूसरे प्लेस को छोड़कर? Well, BKC is one major ground which we have, you know, and has a lot of class in it, you know, and MMRDA grounds पे Make in India भी हुआ था, right? So I somehow feel that it is one place, and Bandra is, how do you call it? Actually मेरे पास एक बहुत अच्छी saying है. People normally say हम लोग सोबो हैं, we are from Sobo, South Mumbai.
South Bombay, right? मैं बोलता हूँ I am from Makabo, Malad Kandili Borivali. That's well said, huh? Yeah. So there's South Mumbai, which is Soho, and then you have Makabo, which is Malad Kandili Borivali. तो मैंने बोला इसके बीच में एक जगह ढूंढते हैं, वो बांद्रा है. And मेरे ख्याल से बांद्रा is iconic because all the Bollywood celebs also living there, isn't it? इसलिए BKC and MMRDA grounds, space was available, 3 lakh square feet. Business capital. You know, I would like to now give the mic to Captain Avinash and he can answer some questions for you. The women's security, you know, which is I feel not an issue in Mumbai, right? But for the fire safety, we have taken special permissions, right? And we've gone to another length in terms of keeping safety for fire regulations. इस फेस्ट में कौन कौन सेलिब्रिटी पार्टिसिपेट करेंगे आएंगे कॉन्सर्ट में? कॉन्सर्ट में तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं. इनफैक्ट द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं www.mumbaifest.com और आपको पता लगेगा कि कितने सेलेब्स इसके साथ जुड़े हुए हैं. बॉलीवुड इंडस्ट्री से, म्यूजिक इंडस्ट्री से, जैसे हरजीत सिंह ने बोला, राइट? यहाँ पे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्डीज ये भी परफॉर्म कर रहे हैं. तो हम लोग हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसको वी आर कीपिंग इट अलाइव बाय द मुंबई फेस्ट. और ये जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है फॉर यंगस्टर्स, वहाँ पे एक म्यूजिक एंड डांस आइलैंड है जिसको हम लोग मैड आइलैंड बोल रहे हैं, जहाँ पे हर तरह का डांस होगा. क्योंकि मुंबई में सिर्फ क्लासिकली नहीं होता है, हिप हॉप भी होता है, कंटेम्प्रेरी भी होता है. तो सारे डांसर्स, बैंड्स हैं, सो मेनी बैंड्स, रॉक बैंड, जैज बैंड, देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी देयर. तो आप आइए फेस्ट में. बच्चों के लिए खास करके हम लोगों ने रखा हुआ है. बच्चों के लिए वी हैव एक्चुअली हाउ मेनी स्क्वायर? Yeah, it's a huge area, you know, we have We have a huge area. Kids area. The kids area, as sir is saying, because sir loves kids, you know, he's a grandfather. इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए वहाँ पे. So there are many games, there are robots, special robots that you're going to come and see, going to interact with you. वो 10 बजे नहीं है, इसको बोलते हैं 9:55. You know, we stuck to the concept because safety is something which is very important, and 9:55 PM is the precise time where your music will shut down. So 10 की जगह मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँगा आप सबको और बोलूँगा 9:55. क्या बात? हाँ, इसके हमारा एक जनरल एंट्री फीस है जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, और हमारा पर्पस था कि हम इसको सच में चैरिटी के एंगल से इसको हम कवर करें. और जनरल ग्राउंड में एंटर होने के लिए सिर्फ 160 रुपीज़, विच इज़ द लोएस्ट फीस एवर एक्चुअली. इफ़ यू गो टू एनी ऑफ द फेस्टिवल्स इट्स नॉर्मली प्रेटी हाई, बट 160 रुपीज़ इज़ द एंट्री फी. एंड देन उसके बाद हमारे जो लाइव कॉन्सर्ट्स हैं उसके अलग अलग फीस हैं, VIP sections, gala sections, you know, standing crowd, and all these details are available on the websites which can be taken care there. जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, फायर की, सिक्योरिटी की, सारे एनओसीज दिए गए हैं और हर चीज़ का टेक केयर किया गया है. जैसे मैंने बताया CSR एक्टिविटी है इसमें मेडिकल कैंप्स हैं, जो कि कोई फेस्ट में वहाँ पे 8 एम्बुलेंस खड़े होंगे ब्रह्मा कुमारी के. तो हादसा तो बात की बात है, किसी को सुई भी लगेगी तो उधर इंतज़ाम है. क्या बात? हादसा बहुत बड़ी बात होगी. हमने तो वहाँ पे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. एक्चुअली क्या है कि सर एक कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी खूब फूंक के पीते हम छाछ Yeah, right. हमने छाछ को भी छाना हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ पे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. आज की डेट में कोई भी बीमारी या कोई भी आता है वो प्रचार से, एजुकेशन से, एजुकेट करने से चीज़ नहीं होती है. तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी कुछ एजुकेट कर रहे हैं. जैसे डायबिटीज कैंप है. आज डायबिटीज़ जो है वो इंडिया में ऐसे फैल रही है जैसे मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं. तो उसको हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, युवा को. ज़रूरी नहीं है कि 40 के बाद 50 के बाद डायबिटीज़ होगी, छोटे छोटे बच्चों को है. तो इसमें हम लोग CSR एक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त है कि बहुत सारे मतलब चीज़ों पे हम लोग प्रचार करने वाले हैं. NGOs, और कोई छोटे मोटे NGOs नहीं हैं, ये NGOs सब काफ़ी बड़े और बहुत रिस्पॉन्सिबल NGOs हैं. सो एज फार एज मेडिकल और हादसे की जो बात है उससे काफ़ी कुछ ज़्यादा हमने वहाँ पे इसका टेक केयर किया है. तो अंदर एंट्री फीस आपने जैसे बताई कि एंट्री फीस A very close friend of mine came to me and asked me to donate this for him, and I'm very pleased to say that I'm a part of this. And as what things are going on, I'm sure this is going to be one of
a calendar event that Mumbai is going to look forward for. And there's lots of things happening as they've been talking about the Guinness Book of World Records. I think this is just going to take it to another level. So if anyone has any questions, you can ask. Any questions, guys? Thank you, brother. And I would like to call upon his son, who is also a heartthrob and the next big sensation in singing. Asa Singh, please. Then I have my very dear friend who has become a full-on Mumbaikar. There's a very big Mumbai in him. Vipin Aneja course at Ajmer Sharif. I'm sure if you all have forgotten the name, but it was Shankar Shambhu, the great, who's also a singer. Vinod Pandit, please join us. So these are some of them who are here to. These are some of them who are here to support the. मारवाड़ी हैं आप सर? बिल्कुल। मैं भी मारवाड़ी हूँ मगर मैं राजपूत हूँ। और इस ट्रस्ट में सर 2 राजपूत हैं, एक्चुअली 3 हैं यहाँ पे। मैं हूँ कैप्टन अमीना सिंह जी हैं और कृष्ण जैसे कहा कि मैं राजपूत हूँ तो आपने इमीडिएटली पद्मावत का पूछ लिया। वैसे तो पद्मावती है मगर आप पद्मावत हैं। देखिए, all we want to say is that the मुंबई में तो इसके बारे में कुछ विरोध हुआ नहीं है। हो रहा है। The art is art. हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से the Mumbai Fest supports everybody and we want everybody to support what Hindu culture is all about.